it's actually the thing that we need to understand is what, if you talk about atoms, what is atom? Atom is actually the smallest particle of any element, right? The smallest particle of any element is known as atom. So आपने periodic table में सबने देखा होगा कि atomic mass atom के साथ लिखा हुआ होता है, atomic mass, right? For suppose if I talk about sodium, तो sodium का आपने देखा होगा atomic mass वहाँ लिखा होगा 23, right? इसी तरह if you talk about the combination of atoms, which is known as molecules, if you talk about molecules, so this is the combination of atoms, you can say that non-metallic atoms combination जो होता है वो molecule कहलाता है आपके पास, और उसका जो mass होता है वो आपके पास क्या होता है, molecular mass होता है. उसके mass को आप क्या बोलते हो बच्चों, molecular mass बोलते हो. That is actually the sum of all atomic masses. That is actually the sum of all atomic masses. For suppose अगर मैं बात करूं chlorine की, तो the atomic mass of chlorine is 35.5. But if I talk about the molecule of chlorine, so the molecular mass of chlorine molecule is 71, because we have two atoms over there. Sum of all atomic masses is known as molecular mass. Same address, we have some compounds as well that are actually the combination of atoms, and you can say that the ionic compounds as well. So they have formula masses. They have formula masses. Like if you talk about NaCl, so this is an ionic compound. So the mass of sodium is 23 and the atomic mass of chlorine is 35.5. So the formula mass of this compound is 58.5. So these are actually the things that you need to understand. Atomic mass kya hota hai, molecular mass kya hota hai, formula mass kya hota hai. And the very simple thing about moles is that when you express them in grams, when you express these things in grams, they are actually known as 1 mole. They are actually known as 1 mole. So you can say that atomic mass of atoms is actually 1 mole of atoms. This is 1 mole of atom. And the molecular mass of molecule is actually the 1 mole of that specific molecule, right? Or you can say that the formula mass of compounds is actually 1 mole of that compound, specific compound. हर compound का, हर molecule का, हर atom का अलग mole होता है, ठीक है ना? अगर आप बात करेंगे तो this is 1 mole of what? Sodium atom. 1 mole of sodium atom. And this is 1 mole of chlorine atom, right? And this is 1 mole of chlorine gas, right? Chlorine molecule. And this is actually 1 mole of sodium chloride. So you can say that every substance has different mass in its 1 mole, right, bacho? Is that clear? Yes, sir. Okay, so how many of you are here? Yes. So what the thing you need to understand is किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो उसका 1 मोल का मास होगा, ठीक है ना? किसी भी मॉलिक्यूल का उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो उसका 1 मोल ही होगा, उसके 1 मोल का मास होगा, ठीक है ना? किसी भी कंपाउंड का जो 1 मोल होगा उसके अंदर उतना ही मास होगा जितना उसका फार्मूला मास है. फॉर सपोज इफ आई गिव यू व्हाट, फॉर सपोज 23 grams sodium. So you know that, sir, this is actually the atomic mass of sodium. So you can say that this is 1 mole of sodium. And if I gave you what, 46 grams, so you understand this कि यार ये sodium के 2 मोल हो गए, ठीक है ना? अगर मैं आपको बोलूं बेटे आपके पास है 69 ग्राम सोडियम, तो आप बोलोगे सर ये 3 मोल्स हो गए, ठीक है ना? मैं अगर आपको बोलूं आपके पास है 92 grams, तो आप बोलोगे सर ये 4 मोल्स हो गए, ठीक है ना? सेम थिंग फॉर सपोज अगर मैं आपको दे दूं 100 grams, now you are in difficulty, you can say that सर अब हम कैसे निकालें, ये तो हमारे लिए मुश्किल हो गया, अब हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमने फॉर्मूला एक ड्राइव किया है, देखें आप, हमने खुद ही ड्राइव किया. 23 को हमने एक्चुअली 23 से ही डिवाइड कराया, जो कि 1 मोल का मास था, हमारे पास 1 मोल आया. 46 को भी हमने 23 से डिवाइड कराया, 69 को भी हमने कराया, 92 को भी हमने कराया, तो हम 100 को भी कराएंगे. सो इट विल बिकम व्हाट, 100 डिवाइड बाय 23 विल गिव यू 4.347 moles. Got it बच्चों? Yes. So actually हमारे पास एक formula ड्राइव हो गया moles का, which is known as the formula number 1 of moles. This is moles can be find out if the mass is given to you. You just need to divide it by the
मोलर मास क्या होता है? एक मोल का मास। मोलर क्या होता है? यू कैन कॉल दिस, ये भी मोलर मास है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके पास हर एटम का जो एटॉमिक मास होता है उसका एक मोल होता है। तो दिस इज आल्सो द मोलर मास, दिस इज आल्सो द मोलर मास, दिस इज आल्सो द मोलर मास। अलग अलग तीन फॉर्मूलाएं बनाने से बेहतर है कि हमने एक ही बना लिया। मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल। दिस इज आल्सो द मास ऑफ वन मोल, दिस इज आल्सो द मास ऑफ वन मोल, दिस इज आल्सो द मास ऑफ वन मोल, दिस इज आल्सो द मास ऑफ वन मोल। तो किसी भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, उसका एक मोल का जो मास होता है वो मोलर मास कहलाता है, ठीक है ना। तो दिस इज द फार्मूला दैट वी ड्राइव फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इफ द मास इज गिवन, ठीक है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, अजान हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, so you can see this that हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है। द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर मोल्स इज मोल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मास। अगर आपको मास गिवन हो तो आप मोलर मास से डिवाइड कराएं, आपके पास मोल्स आ सकते हैं, ठीक है ना। तो मोलर मास क्या है? मोलर मास है आपके पास एक मोल का मास। वो एटॉमिक मास हो सकता है एटम्स का, वो मॉलिक्यूलर मास हो सकता है मॉलिक्यूल्स का, वो फॉर्मूला मास हो सकता है कंपाउंड्स का। तो फॉर सपोज इफ आई हैव अ क्वेश्चन लाइक हमारे पास एक पार्ट है, it is saying that calculate the number of moles in the following. Calculate the number of moles in the following. And the first part of this, for suppose, is we have 250 grams of calcium carbonate. So you can see this, that right now we have 250 gram is what? Mass. This is what? Mass. If the mass is given, we can divide it by molar mass of calcium carbonate to get the number of moles of calcium carbonate, right? We need to find out the number of moles of calcium carbonate. So we must need to divide the mass of calcium carbonate by the molar mass of calcium carbonate, right? Everything should be same, right? So the formula is same. Moles is equals to mass over MR. The mass is actually given to you, which is 250. And what is the molar mass of calcium carbonate? Calcium is actually 40 plus carbon atomic mass of that 12. You can find it out from periodic table, and oxygen is 16. Right now we have 3 oxygen, so that is why into 3. So the total is 100. When we divide it by 100, so we get the number of moles in this amount, which is 2.5 moles. Right, Bacho? जी सर, राइट, क्लियर। So this is what you need to do in the calculation of moles, right? It's quite easier right now क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ सिंगल स्टेप करा रहा हूँ, ठीक है ना। सिंगल स्टेप मींस जितने भी आपके पास फॉर्मूलाए होंगे उन सारे फॉर्मूलाए को मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा पहले, ठीक है ना। तो राइट नाउ अभी हम सिंगल स्टेप कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ मोल निकालना सीख रहे हैं। पेपर में मोल्स निकालने आते हैं 1 मार्क के लिए, तो दिस इज फॉर 1 मार्क। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अभी हम 1 मार्क के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। सेकंड स्टेप होगा कि हमें एक चीज गिवन होगी, हमें दूसरी चीज निकालनी होगी, मास गिवन होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होगी, कुछ और इस तरह निकालना सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी साउंड आना बंद हो गई है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
Okay, बच्चों, can you hear me बेटे? Every one of you? जी सर, अब आ रही है आवाज। Okay, Yes, sir. sorry for the interruption. Actually ये interrupt हो गया था बीच में। देखिए, मैंने यहाँ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। You need to solve these questions बच्चों, और these are the skill test for you. We have 5 questions, B C D E F. Oh my, E खा गया। Oh my God, sorry. तो ये 5 क्वेश्चन है आपके पास, B C D F and G। तो ये आप इसके पास लिख लीजिएगा, ठीक है? आप सॉल्व करके मुझे मैसेज कीजिए ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप लोगों के समझ। तो मैं दे मास दे दूं किसी भी सब्सटेंस का, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट द नंबर ऑफ मोल्स। दैट्स क्वाइट इजियर फॉर यू नाउ ना। तो ये अच्छी बात है कि आपको ये चीज आ गई है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, and the next thing is that we just need to convert this formula into the different form. All right, for suppose just look at over here. The formula is when you need to find out moles, the mass is given to you and you can divide the mass by mr, which is a constant value. You can find it out from periodic table and you can easily find out the number of moles. For suppose अगर मैं आपको moles दे दूं and I ask for the mass, so you can derive this formula for mass. You know that mr यहाँ divide हो रहा है, वहां जाके multiply होगा ना, so it will be mass का formula क्या हो जाएगा, moles into mr. So for suppose I gave you what, calculate the mass for the following, calculate the mass of the following. अगर मैं आपसे कहूं कि आप mass calculate करें, just like A part मैंने आपको दिया क्या, we have 5 moles of water. For suppose we have 5 moles of water, so we can easily find out the mass of this, and the mass is actually moles into mr, right? And the moles right now are 5 and the mr of water is 18. So we can multiply 5 with 18, so it will give you 90 gram mass of water. Is that right, but or not? जी सर, राइट। Yes. Okay, so then we have a skill test for you as well. आपको जो करना है, let's start. Part B is, for suppose you have 6.88 moles of sodium sulfate. Same as it is, we have 0.715 moles of potassium dichromate, K2Cr2O7. Then we have, for suppose, 66 moles of sulfur trioxide. We have 7.06 moles of like calcium sulfate. And the last is, for suppose you have 0.006 moles of chlorine gas. चलें जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कि आपके इन सब के आंसर भी सही आते हैं या नहीं। ओके सर। चलें तो हम इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट पार्ट हम इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, mr को भी कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन सब्सटेंस के। जस्ट लुक एट ओवर हियर। फॉर सपोज अगर मैं आपको दे दूंगे दैट वी हैव अननोन सब्सटेंस, राइट, कोई अननोन सब्सटेंस है हमारे पास। जो अननोन सब्सटेंस होगा, फॉर सपोज उसका मैंने आपको मास भी दे दिया, उसका मैंने आपको मोल्स भी दे दिए। ये दोनों चीजें मैंने आपको अगर उसकी दे दी, मास भी और मोल्स भी, और मैंने आपसे पूछा बताएं मुझे mr कैलकुलेट कर इस सब्सटेंस का। So we know that moles are actually what? They are mass over mr. Moles क्या होते हैं आपके पास? Mass over mr होते हैं। So if you want to find out mr, so it will be mass over moles, right or not? Yes. Yes. So for suppose I am saying to you that बच्चों you have 0.5 moles in 20 grams. In 20 grams आपके पास कोई substance है, उसके 0.5 moles हैं 20 ग्राम में। So we can find out कि इसका mr कितना होगा। कितना mr होगा इसका? For suppose इसका mr होगा आपके पास, मास कितना है 20 ग्राम, और mr कितना है आपके पास, मोल्स कितने हैं 0.5. So it will give you 40 mr. 40. कितना mr हो गया आपका? mr हो कैल्शियम। गया। हो सकता है ये कैल्शियम भी हो सकता है। फॉर सपोज अगर मैंने वहां दिया वो आपको कि बेटे आपके पास ये है XOH है, क्या है ये XOH है, तो बताएं कि X क्या चीज है। तो मैं इस तरह भी तो पूछ सकता हूँ ना आपसे, जरूरी नहीं है कि ये एटॉमिक मास हो सकता है ये
फॉर्मूला मास हो। सो यू कैन से ओह, दैट सर XOH का जो टोटल मास आया है वो आया 40 mR। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन माइनस कर सकते हैं। सो इट विल गिव व्हाट 23। तो इसका मतलब जी सर सर, ये 23। जो X जो है सोडियम मेटल हो गया, है ना। जी सर। ऐसा भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ये एटीपी में खास तौर पे इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, Yes. sir. चलें आप इसको लिखें अपने पास, मैं आपको जो है शेयर कर रहा हूं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप के ऊपर, और वो हमें करने हैं आप सॉल्व, ठीक है ना। इन तीनों की मैं एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है ना। आप ठीक है लोगों के सर। साथ और चीज शेयर कर रहा हूं, और वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज है, तो वो भी फाइंड आउट करें, क्योंकि आप लोग छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं उसके अंदर, जल्दबाजी में मेरे ख्याल से आप लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो भी आपने सही करनी है, उसमें मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ठीक है। ठीक है सर। चलें आप ये इसको कर लें पहले जल्दी से, शाबाश। सर मेरे पास एक दो सवाल हैं सर। वो एक तो सवाल ये है कि P4 में ग्राफ का सवाल कंपलसरी आता है? बेटे अगर आप कुछ पुराने क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन कंपलसरी ही नजर आएगा। सो यू कैन से दैट कि ये आता है कंटिन्यूअसली, पेपर में आता है ये। अच्छा, और सर एक और सवाल ये है कि सर पेपर 4 में टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए, क्योंकि मतलब सिर्फ 1 घंटा होता है जो बहुत कम है। हाँ, 1 घंटा बहुत आराम से पेपर हो सकता है आपका, बहुत आसान पेपर होता है, एटीपी इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है सर। एटीपी के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास एटीपी काफी आसान हो जाता है। आपके पास वो मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, और वो आप इजीली कर लोगे। और अब जो एटीपी आएगा वो तो आएगा भी 40 मार्क्स का ना। अब 40 मार्क्स का पेपर है आपके पास अगर, तो मेरे ख्याल से आप उसको इजीली कर सकते हो 1 आवर के अंदर। तो सर पहले 60 मार्क्स का था ना, ये मतलब लास्ट 40 का, ईयर्स में? ये सब 40 का हो गया। ओके सर। ये सर ये चेंज हुआ कब वैसे, मतलब कौन से साल में हुआ? ये जस्ट फर्स्ट टाइम आएगा ये पेपर ना। अच्छा, पहली दफा होगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है बच्चों, सो right now I am just going to share the questions with you